Hello and welcome. Hope you are all doing good. Well, today we are going to discuss the concept and functions of money. In our last lecture, we talked about barter system, its concept and limitations. And we said that the limitations and difficulties of barter system led to the discovery of money. In today's lecture, we will try to understand the concept and functions of money, and at the same time, we will try to know whether the money is able to overcome or to remove the difficulties of barter system or not. Now, what is money? If we ask the same question to the general public, they will give you different answers. Some people will say that money is money. In fact, most of the people will say that money is money, कि पैसा पैसा होता है, and someone will show you a currency note as a money. But this is not the case in real sense. If you ask the same question to the students of economics, they will give you different answer. And what is that answer? Let's try to understand it with the help of some definitions. So according to Crowther, money is anything that is generally accepted as a means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. That is, Crowther says that कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी कमोडिटी या गुड जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जा रहा हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसके साथ साथ जो एक्ट कर रहा हो एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है. तो क्रॉथर का मानना है कि जिस किसी चीज़ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हो उसको हम मनी कहेंगे. दैट मीन्स it could be anything, that is, it could be a pen, it could be a commodity, or it could be anything that have all these properties as per Crowther. Okay, now the question is where from this general acceptability comes from. Okay, this general acceptability comes from the government of the country. For example, if we take an example of a 500 rupee note which was a legal tender and was and has a general acceptability before the demonetization in India. तो यहाँ पे जो है, जो वो 500 का नोट था उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी उस वक्त, एंड दैट वेरी नोट वाज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज बट बिफोर डिमोनेटाइजेशन. बट प्रेजेंटली एट प्रेजेंट अगर हम उस नोट को कहीं पे मार्केट में ले जाएंगे या कहीं पे ले जाएंगे और उसको यूज़ करना चाहेंगे, but that very note cannot be accepted in payments or cannot be accepted as a medium of exchange at present. Why? Because that very note has lost its credibility, has lost its general acceptedness. Why? Because government ने उन notes को legal tender मानने से या general acceptance देने से इनकार किया है. That very note is nothing more than a piece of paper at present. Okay, so this means that कि ये जो जनरल एक्सेप्टेंस जो है किसी चीज़ को जो मिलती है एज अ मनी और जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो कहाँ से आती है? वो गवर्नमेंट से आती है. ठीक है, या हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमारे पॉकेट्स में जो करंटली पेपर करेंसी रखी हुई है, ये पेपर करेंसी जो है इट्स ओनली एक्सेप्टेबल इन इंडिया, or we can say it's only acceptable within the borders of India. If you go outside India, suppose हम अगर अमेरिका जाएंगे तो there the currency notes which we have in our pockets is nothing more than the piece of a paper. क्यों? Because वहाँ पे इनकी कोई general acceptability नहीं है. तो वहाँ पे किस चीज़ की acceptability है? That is dollar, अमेरिकन डॉलर. सिमिलरली अगर हम किसी दूसरे देश में जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी एक अलग करेंसी है. ठीक है, सो हम कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगे, दैट मीन्स जिसमें जनरल एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, जो जिसमें जनरल एक्सेप्टेंस हो किसकी? एज अ मीन्स और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, और जो एक्ट कर रहा हो एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, वो मनी कहलाएगा. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द
another definition given by Robertson. Once again, an important definition. He says that anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligations. कि कोई भी चीज़ जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा हो, किस लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनके लिए जिस चीज़ को हम एज अ पेमेंट यूज़ करेंगे, दैट वेरी थिंग कैन बी कॉल्ड एज मनी. ओके, नाउ another definition given by Walker. He says that money is what money does. पैसा वही है जो पैसा करता है. अब पैसा क्या करता है? That very thing can be understood with the help of the functions of money. Okay. And so far as the functions of money is concerned, it has been put into a couplet that money is a matter of functions for a medium, a measure, a standard and a store. Well, these are the four functions of money which were the difficulties or limitations of the barter system, and they are further subdivided into two headings, that is primary functions of money and the secondary functions of money. The first two, that's medium of exchange and measure of value, are known as the primary functions of money, and store of value and standard of deferred payments are known as the secondary functions of money. Well, now we will discuss them one by one. So far as the first one, that's medium of exchange, is concerned, it means that at present we can simply buy and sell anything with the help of money. Okay, so but this was not possible in the barter system. We know that in barter system we used to exchange the goods for goods. Okay, but at present with the help of money as a medium of exchange, we don't need to exchange the goods for goods. ओके, और वन मोर थिंग, बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. दैट मीन्स अगर किसी बंदे को एक्सचेंज करना होता था कोई चीज़, तो उसको एक ऐसा बंदा ढूंढना होता था जिसको उस चीज़ की नीड हो, एट द सेम टाइम उसको वो चीज़ भी हो जो पहले वाले बंदे की नीड हो. ठीक है, तब जाके उनका एक्सचेंज कंप्लीट होता था. बट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, या हमें अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं टू सेल एंड बाय द थिंग्स और गुड्स. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी. एंड द सेकेंड फंक्शन, दैट इज measure of value. Well, during barter system we were not able to measure the value of our goods and services. Suppose at that time if a person, say X, has food and was in need of cloth, so उसको पता नहीं होता था कि मुझे कितने सारे क्लोथ के बदले में कितना सारा फूड देना होगा. क्यों? क्योंकि that was lacking the common measure of value. ओके, तो इस सूरत में वन पार्टी वाज इन लॉस और दूसरी पार्टी को गेन होता था. बट विद मनी एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हमें आज के दौर में पता है कि अगर हमारे पास फूड है, से राइस, कि 1 kg राइस का वैल्यू कितना है. ठीक है, एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ द क्लॉथ आल्सो, और वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. ठीक है, सो दैट मीन्स एट प्रेजेंट वी हैव द मनी वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी थिंग. ठीक है, और हम हर एक चीज़ का मनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड अल्टीमेटली वी आर इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एज वेल, विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट इन द बार्टर सिस्टम. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में हम नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट हम जो है जो भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पाए जाते हैं, उनका हम एक मनी वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. वेल, द थर्ड वन, दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, तो दैट मीन्स कि वट एवर वेल्थ वी हैव इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कमोडिटीज, वी कैन सिंपली कन्वर्ट our wealth into money
money and can easily save the value of our wealth. It was also impossible in the barter system, क्योंकि barter system में हमने देखा कि कोई मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं था और हम जो हमारे गुड्स थे उनको भी हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे किसी ऐसे कॉमन मीडियम ऑफ कॉमन वैल्यू में जो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जो भी हमारी वेल्थ थी दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ आवर वेल्थ बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ मनी जो भी हमारे पास wealth है we can simply convert it into money and can save our value in the form of money. Okay, now fourth one, that is standard of deferred payment. So deferred payment is the payment which is made in future, ठीक है। तो ऐसा पेमेंट जो फ्यूचर में या बाद में किया जाता है that's called the standard of deferred payment, and it is also possible with the help of money, or we can say without money it's not possible. So in barter system this was also not possible, ठीक है, ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो भी क्रेडिट में काम होते हैं वो मनी के बगैर पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी बिकॉज almost all the business activities or transactions are done on the basis of credit. Okay, one more important function which is of money is money as a liquid asset. That means money does not need to be converted into cash. So liquidity means convertibility of assets into cash. So money is the most liquid asset. It does not need to be converted into cash before it is before कि या इससे पहले जो इसको spend किया जाए. You can directly spend the money or use money without converting it into any other asset. Okay, so one more function that's given in some books, that is known as transfer of value. Now what is this transfer of value? Look, suppose कि आप जो है बार्टर सिस्टम में जी रहे हो और आपके पास जो है 100 शीप है, ठीक है, एंड यू हैव 10 cows, and at the same time you have 50 quintals of wheat, and you have 20 quintals of rice, etc. तो अब जो है आप चाह रहे हैं कि हम एक स्टेट से निकल के या हम एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाए। तो आप क्या करोगे? तो आपने बार्टर सिस्टम में अगर आप है तो आपने ये सारी चीज़ें जो है अपने साथ ले जाने होंगे, विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इवन इट इज़ impossible to some extent, ठीक है। But with the help of money you can simply convert all these things into cash or money, and you can simply transfer that value into the next state, और वहाँ पे जो है आप ये सारी चीज़ें फिर से खरीद सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वाई इट्स नोन एज इट्स अनदर फंक्शन ऑफ मनी, दैट्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो अपनी वैल्यू को आप सिंपली और ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Thank you. Okay, hope you have got it. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.